subjects of international law. There are two words. One is subject and another is object. So let us see ये subject object word का मतलब क्या है. Because some jurists considered individuals and international organization not as the subject rather as the object. तो इन दोनों वर्ड का पहले मतलब समझते हैं. सब्जेक्ट मतलब क्या एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द ऑब्जेक्ट. इफ समथिंग इज ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब दैट थिंग एंजॉयज ओनली राइट, यानी उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. वी नो दैट राइट एंड ड्यूटी ऑलवेज गो टुगेदर. बिकॉज दे आर कोरिलेटिव एंड एज दे आर कोरिलेटिव तो अगर राइट एक पार्टी की होती है ऑफ वन पर्सन, let this will be of A, then obviously that is the corresponding duty on the part of some person B. But if anything is object तो उसके पास केवल rights होगी. There is no responsibility, there is no duty. Object means that particular thing just enjoys right. There is no responsibility. There is no responsibility. I mean, there is no duty. तो अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है ऑफ एनीथिंग, इट मींस इट जस्ट हैव द राइट, नो करस्पॉन्डिंग ड्यूटी. whereas if something is subject, it has both. If right is there, then obviously there is a corresponding duty to it. एक चीज पे जहां पे सारे जूरिस्ट अग्री करते हैं दैट नेशन, दैट इज द स्टेट, दैट आर द सब्जेक्ट. इस पे तो कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. सारे जूरिस्ट मानते हैं कि नेशंस आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. डिफरेंस कहां पर आता है? इंडिविजुअल्स पर एंड ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो देख लेते हैं, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया, फिर देखते हैं जूरिस्ट का ओपिनियन में डिफरेंस क्या क्या है. सब्जेक्ट को भी क्लासिफाई इनटू टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं. इट कुड बी एक्टिव सब्जेक्ट और इट कुड बी पैसिव सब्जेक्ट. पैसिव सब्जेक्ट को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डेरिवेटिव सब्जेक्ट. तो लेट अस अंडरस्टैंड ये एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट जिसे डेरिवेटिव सब्जेक्ट बोलते हैं, ये है क्या ऑफ इंटरनेशनल लॉ. एक्टिव सब्जेक्ट इज नेशन, दैट इज स्टेट, because international law is such law which govern the relation between state. तो जो एक्टिव सब्जेक्ट है वो कौन है? स्टेट है, नेशन है. और पैसिव सब्जेक्ट या डेरिवेटिव सब्जेक्ट इज individuals and international organization. Why they are called as passive subject or derivative subject? क्योंकि directly they have no say in international law. Ultimately through state. For example, अगर सरबजीत की right has been violated, तो इंडिया का नागरिक था तो इंडिया के थ्रू ही has right in international domain. Individual person do not have right as we have in municipal law. इसीलिए इनको बोला गया है कि पैसिव सब्जेक्ट या डेरिवेटिव सब्जेक्ट, क्योंकि ये अगर कोई भी राइट्स क्लेम करेंगे तो थ्रू स्टेट दे विल बी क्लेमिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रीटी साइन करते हैं तो सिग्नेटरीज आर बाउंड टू इट. समटाइम इट इज बीइंग पुट ऑब्लिगेशन काइंड में टू थर्ड पार्टी ऑल्सो. तो एज दे आर डिराइविंग थ्रू स्टेट विच इज द मेन सब्जेक्ट, इसीलिए इसका नाम है, आई मीन सब्जेक्ट की कैटेगरी है पैसिव सब्जेक्ट और डेरिवेटिव सब्जेक्ट. अंडरस्टूड दिस? अब देख लेते हैं
स्टेट पे देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उसे हम नहीं क्लासिफाई करेंगे. जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दैट वी सी. तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. क्या वो सब्जेक्ट है? आंसर इज यस. हाउ? लेट अस सी. पहला सब्जेक्ट तो हमने देख लिया जहां पर देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज द स्टेट और नेशन. दूसरा देखते हैं दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. क्या हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या हम उनको माने कि दे आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? आंसर इज यस, दे आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. और इफ वी हैव कन्वेंशन तो वहां से हम डिराइव कर सकते हैं. अगर कन्वेंशन ट्रीटी नहीं है तो केस लॉ के थ्रू हम डिराइव कर सकते हैं. कोई भी चीज अगर हम स्टेटमेंट देते हैं इट मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर. यस, अगर हमें कहना है कि मंदिर में रखी मूर्ति इज अ लीगल पर्सन, हाउ वी आर सेइंग सो? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है इफ वी आर सेइंग दैट पार्टनरशिप इज अ लिविंग पर्सन नॉट द लीगल पर्सन, तो मुंशीराम का केस इज देयर वो क्षेत्रा म्युनिसिपैलिटी. तो देयर इज अथॉरिटी which says that international organization have a legal status. United Nations enjoys the status of legal personality and it is a legal person as held in the case of reparation for injuries suffered. नाम है केस का reparation for injuries suffered. Reparation for injuries suffered in the service of United Nations. In the service of United Nations. In this case, ICJ, International Court of Justice, have held that UN, that is United Nations, is a legal personality. यानी इस केस में क्या बोला गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लीगल स्टेटस. IU stand for international organization. It has a status of legal personality and they are the subjects of international law. क्योंकि अगर कोई चीज सब्जेक्ट होगी इंटरनेशनल लॉ की तो क्या उस पर इंटरनेशनल लॉ गवर्न करेगा? आंसर इज यस. जैसे जब आप हिंदू लॉ पढ़ते होगे तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हो? हु इज हिंदू? यस. व्हेनेवर यू रीड मुस्लिम लॉ सबसे पहले पढ़ते हो हु इज मुस्लिम बाय रिलीजन, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज टू मुस्लिम, हिंदू लॉज अप्लाइज टू हिंदू. सिमिलरली इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट्स पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर दी सब्जेक्ट as held in the case of reparation for injuries suffered in the service of United Nations. हाँ बच्चे केस का नाम है, this is the name of the case. Citation is 1950. अब तक मैंने जितना बताया है प्लीज राइट इट, फिर आगे चलेंगे रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स. नहीं, there are two terms, there are two terms, one is subject, one is subject and another is object. Full stop. Any entity, entity, E-N-T-I-T-Y, entity मतलब personality, any entity which possess, any entity which possess international personality
international personality is called an international person is called an international person or a subject of international law or a subject of international law. Full stop. A subject of rules is a being. A subject of rules is a being upon which being, B-E-I-N-G, human being wala being, yes, being upon the rules, upon which the rules confer rights, upon which the rules confer rights and capacity and imposes duties and responsibilities and imposes duties and responsibilities. In other words, if something is subject, in other words, if something is subject, it has certain rights and corresponding duties and have corresponding duties. It means subject enjoys rights. It means subject enjoys rights as well as bear the responsibility, as well as bear the responsibilities. Whereas on the other hand, object enjoys only rights and is not burdened by any duties in form of responsibilities and is not burdened by any duties in form of responsibilities. Change the para. Some jurists classify subjects into A. Active subject, B. Passive subject or derivative subject. A point is active subject, B is passive subject or derivative subject. Change the line. States oblique nations are considered as state oblique nations are considered as active subjects because law is created exclusively by them. Law is created exclusively by them, whereas individuals and international organizations
individuals and international organizations are considered as passive or derivative subjects, of the international law. Change the paragraph. Following are the, put the heading, following are the subjects of international law. First, states / nation. Second, international organizations. Third, individuals to some extent. Now put the heading, status of international organizations. Status of international organization as subject of international law. This was the heading. Now you write in this, international organizations are considered as subjects of international law. Full stop. ICJ is मतलब International Court of Justice. ICJ in, put the name of the case, reparation for injuries suffered in the service of United Nations. Citation is 1950 ICJ. Where, okay, you write it. Done. Where ICJ has accorded legal personality to the UN, and the court held that organization has the capacity to claim reparation. मतलब compensation होता है. Compensation क्यों हम देते हैं? Why we give compensation? क्योंकि whenever there is some wrong, there must be a remedy. Yes, ubi just sibi remedium. Where there is a right, there is a remedy. अगर केवल लॉ हमें राइट्स बता दे, लेकिन एट द सेम टाइम ये ना बताए कि व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ सच राइट्स, तो क्या लॉ का कभी पर्पस फुलफिल हो पाएगा? नेवर. तो इसीलिए राइट्स के वायलेशन पे रेमेडी बताई जाती है. ऑफेंस होता है, रेमेडीज गिवन इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. सिविल रॉन्ग में वी गिव कंपनसेशन एज द मेजर रेमेडी. तो मेरा सवाल आपसे ये है, व्हाई वी गिव कंपनसेशन व्हेन देयर इज सम रॉन्ग डन to restore the position in which he would have been if the wrong has not done to that person. ये आप जब compensation पढ़ोगे, especially in contract law, there it will be taught to you. और आप चाहो तो साइड में लिख लो, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि why compensation is awarded as a form of
रेमेडी साइड में लिख लो। टू रिस्टोर दी पोजीशन, क्यों हम कंपनसेशन देते हैं एज फॉर्म ऑफ रेमेडी, स्पेशली इन सिविल रॉन्ग के केस में, क्योंकि क्राइम इज द सीरियस रॉन्ग, उसमें तो वी गिव द पनिशमेंट टू मेक द डेटरेंट इफेक्ट इन द सोसाइटी। अगर हम पनिश नहीं करेंगे तो पोटेंशियल रॉन्ग डूअर्स क्या करेंगे, ऐसे रॉन्ग फिर करेंगे। जब आप पनिशमेंट पढ़ोगे तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट भी पढ़ाई जाएगी इन बीएनएस, मेनी थ्योरीज आर देयर। सो कंपनसेशन दिया जाता है टू रिस्टोर द पोजीशन sorry in which to restore the position in which he would have been if no wrong has been suffered by such person। यानी मलहम लगाने का काम करता है कंपनसेशन। अगर उस इंसान के साथ कोई रॉन्ग नहीं हुआ होता तो जिस पोजीशन में वो होता वो हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं थ्रू कंपनसेशन। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड अवॉर्डिंग कंपनसेशन। और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है रिपरेशन, केस के नाम में भी है और अभी आपको डिक्टेट भी करा रही हूँ। रिपरेशन का मतलब होता है क्लेम करना डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन होता है। आपको एक दिन शायद बताया था कि डैमेज एंड डैमेजेस वर्ड आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है। डोंट टेक वन वर्ड एज द सिंगुलर अनदर एज द प्लूरल। लॉ में एवरी वर्ड हैज पिक्यूलियर मीनिंग। और ये लास्ट ईयर बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, डैमेज और डैमेजेस में डिफरेंस। डैमेज का मतलब क्या होता है, हार्म, लॉस, इंजरी, किसी भी तरह का हार्म, लॉस और इंजरी। whereas damages means compensation, monetary relief। तो रिपरेशन का मतलब होता है क्लेमिंग डैमेजेस, यानी कंपनसेशन क्लेम कर। और कई बार आपकी बुक्स में गलतियां दी हुई होती हैं, डैमेजेस को केवल डैमेज लिख के छोड़ देते हैं, या कई कई बार तो मतलब वी कैन से ब्लंडर इज गिवन। फॉर एग्जांपल रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस लिखा होता है, इट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज नॉट द डैमेजेस। हम कंपनसेशन को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उस इंजरी जितनी हुई है तो अप टिल व्हाट एक्सटेंट उस इंजरी के लिए वी आर मेकिंग दैट डिफेंडेंट दैट रॉन्ग डोर टू बी लायबल। तो बहुत बार अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में गलतियां पाओगे, आप मत करना, है ना, बिकॉज यू नो दी करेक्ट फॉर्म की डैमेज क्या है और डैमेजेस क्या है। तो रिपरेशन का मतलब होता है क्लेमिंग डैमेजेस। आप कंटिन्यू करो उसमें। लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा है, हैज द कैपेसिटी टू क्लेम रिपरेशन फॉर। पहले आप सुन लो क्या इस केस में बोला गया। इस केस में ये बोला गया कि अगर किसी इंडिविजुअल की राइट वॉयलेट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास लोकस स्टैंडाई है कि कंपनसेशन क्लेम कर सके फॉर दोज इंडिविजुअल्स। जैसे सरबजीत की ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठी थी ना यूनाइटेड नेशन में, तो यूनाइटेड नेशन हैज प्लेड द रोल ऑफ रेजिंग वॉइस। Why? Because that is also the subject of international law that was being laid down in this case कि international organization individuals के लिए claim करते हैं compensation if some wrong is done to them, if some damage is done to them, it means they are the subject of international law। Otherwise law में अगर locus standi नहीं होता है तो one cannot claim compensation or any remedy for other। Write this thing, I repeat, organization has the capacity to claim reparation for damage suffered, reparation for damage suffered by the victim or by persons okay the court held that the organization has the capacity to claim reparation for damage suffered by the victim or by persons entitled through him
from a state, from a state. तो आई होप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस इज क्लियर कि यस दे आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल्स का क्या स्टेटस है, और इंडिविजुअल्स के स्टेटस को लेकर देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और टाइमलाइन भी है। पहले आप सुनो फिर आई मेक यू टू राइट। सबसे पहले हम क्लासिक व्यू देखेंगे। क्लासिक व्यू मतलब इन द वेरी बिगिनिंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लासिक व्यू में क्या था, इंडिविजुअल वाज नॉट कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दे आर ओनली कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। इसीलिए ओपनहैम ने अपनी डेफिनेशन में इंडिविजुअल्स को इंक्लूड भी नहीं किया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम jurists like ओपनहैम, हॉल एंड ब्रेले, इनका मानना था कि ये केवल ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स इंजॉय करेंगे राइट्स जो इंटरनेशनल लॉ कॉन्फर करेगा, बट दे हैव नो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो डू यू नो सरब जी जब हमारा इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके गया था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उसको क्या ट्रीट करता, एलियंस की तरह ट्रीट करता और उसे मार भी सकता था। वो बात अलग है कि जो कंडीशन हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी। अभी हम आइडियल सिचुएशन बात कर रहे हैं। इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट दी सब्जेक्ट तो क्या होगा, अगर आप दूसरे कंट्री के जैसे मछुआरे चले जाते हैं ना श्रीलंका के, वहां के यहाँ जाते हैं, तो हम उन्हें क्या ट्रीट करने लगेंगे, एलियंस, और हम उन्हें शूट कर सकते हैं। दैट राइट वी हैव, isn't it the unjust thing done to the individuals? Yes, sometime innocently also you cross, क्योंकि सी में जैसे रोडवे पे तो लिखा होता है कि दिस साइड इट इज महाराष्ट्र, दिस इज गुजरात, लेकिन सी में इट इज नॉट प्रॉपरली क्लियर ना कि यहाँ ये हमारी बाउंड्री लग रही है, उनकी लग रही है। हो सकता है कि इनोसेंस में भी पर्सन माइट क्रॉस दैट बॉर्डर, माइट क्रॉस दैट माइल्स विच इज नॉट इन अवर jurisdiction, तो दैट विल बी अनजस्ट। तो क्लासिक व्यू में देयर वाज इंडिविजुअल्स टू बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, और एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर मान लो सपोज दिस इंडिया का सिटीजन, उसने अपनी नागरिकता यहाँ की वेव ऑफ कर दी है, त्याग दी है, एंड ही वांट टू टेक दी लेट इट बी सिटीजनशिप ऑफ नॉर्वे या कनाडा, ऐसी कंट्री में जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और हेल्थ पे गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है। तो सपोज यू वांट टू टेक सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, अप्लाई किया है, अभी मिला नहीं है, तो दैट इंडिविजुअल हु इज स्टेटलेस, स्टेटलेस मतलब उसने अपनी कंट्री की नागरिकता त्याग दी और दूसरे कंट्री की इन प्रोसेस है, ही हैज नॉट गॉट दैट, तो उस सिटीजन की अगर किसी भी राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ही हैज नो से इन इंटरनेशनल लॉ। दिस वाज द क्लासिक व्यू, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट्स मानते थे, इट ओनली हैज सर्टेन राइट्स, कोई ड्यूटी नहीं होती थी। साथ ही साथ इंडिविजुअल्स एज नॉट कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट, तो अगर एलियन मतलब अगर आप दूसरे कंट्री को क्रॉस करोगे यू आर कंसिडर्ड एज एलियन। अगर आप स्टेटलेस हो देन ऑल्सो यू हैव नो रेमेडी इन इंटरनेशनल लॉ। इफ सपोज समथिंग हैपेंस टू दैट पर्सन, सपोज उसने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी है, कनाडा की लेने वाला है, एंड सम रॉन्ग इज डन, तो नो इंटरनेशनल लॉ विल प्रोटेक्ट दैट पर्सन। दिस वाज द क्लासिक व्यू। लेकिन ये व्यू यूनाइटेड नेशन चार्टर आते ही चेंज हो गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रियम्बल में वर्ड लिखा है पीपल, पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। पीपल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स। तो यूएन चार्टर आते ही ये स्टैंड क्लासिक व्यू को हटा दिया हमने, एंड वी आर कंसिडरिंग इंडिविजुअल्स एज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देख लेते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ इसको मानते हैं कि केवल इंडिविजुअल्स ही ओपिनियन है, मतलब केवल इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट्स। कुछ बोलते हैं कि टू सम एक्सटेंट। तो जूरिस्ट के ओपिनियन में जो डिफरेंस है दैट आई एम टेलिंग नाउ। क्लासिक व्यू समझा दिया, फिर यूनाइटेड नेशन के बाद दे आर कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट। नाउ देयर आर सम जूरिस्ट जो बोलते हैं, अभी आप सुनो, आई विल मेक यू टू राइट टाइमलाइन के फॉर्म में। देयर आर सर्टेन जूरिस्ट विच कंसिडर्ड इंडिविजुअल्स टू बी द ओनली सब्जेक्ट। एक ऐसा खेमा भी है जूरिस्ट का जो कहता है कि केवल इंडिविजुअल्स ही हैं सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ के। क्यों? क्योंकि जो स्टेट की राइट्स होगी वो इंडिविजुअल्स की राइट होगी। फॉर एग्जांपल इंडिया की राइट मतलब क्या, इंडियंस की राइट, इंडियंस की राइट मतलब इंडिया की राइट। तो अकॉर्डिंग टू देम इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट बिकॉज द राइट्स ऑफ स्टेट्स आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। कैल्सन इस व्यू के हैं, अलॉन्ग विथ कैल्सन वेल्सेले, ये सब इस ओपिनियन के कि केवल इंडिविजुअल्स ही सब्जेक्ट है। स्टार्क, जिसकी डेफिनेशन भी वी हैव रेड, who has said international law to be a weak law,
ही हैज सेड दैट किसी भी एक चीज को सब्जेक्ट होने के लिए इंटरनेशनल लॉ में इट मस्ट हैव 3 एट्रीब्यूट्स, 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली, इट मस्ट बी दी होल्डर ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके पास कुछ राइट्स होनी चाहिए, कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। दूसरा है, ही मस्ट बी दी होल्डर ऑफ प्रोसीजरल कैपेसिटी। प्रोसीजरल कैपेसिटी मतलब अगर उसकी राइट्स वायलेट हो जाए तो प्रोसीजरल लॉ होना चाहिए टू प्रोटेक्ट हिज राइट। जैसे कुछ ट्रीटीज में हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टेट के खिलाफ, जैसे वर्सली ट्रीटी में इवन जर्मनी के खिलाफ सूट लाया जा सकता है इफ दी सिविलियंस का राइट इज बीइंग वायलेटेड। तो सेकंड एट्रीब्यूट इज प्रोसीजरल कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर राइट्स वायलेट हुई, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारी कोई भी राइट वायलेट होगी, वी हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट। यस, वी हैव कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं सिविल लॉ में, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन शुड बी देयर इन एनीथिंग टू बी क्लासिफाइड एज सब्जेक्ट। तीसरा है, ही मस्ट बी द प्रोसेसर ऑफ इंटरेस्ट, उसके फेवर में इंटरेस्ट होना चाहिए, ही मस्ट बी होल्डिंग ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट, तब हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज सब्जेक्ट। तो अब ये सारे तीनों एट्रीब्यूट्स पे हम इंडिविजुअल को चेक करेंगे, क्या इंडिविजुअल्स के पास राइट्स हैं? आंसर इज यस, मेनी कन्वेंशंस आर देयर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आर्टिकल 1 देखोगे ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो उसमें पर्पस लिखा है यूएन चार्टर का, तो वहां पे लिखा है टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये सब कैसे होगा? व्हेन देयर इज अ पीस। पीस कब होगा? जब लोगों के बीच में पीस एंड हार्मनी इज देयर, तो इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट पीपल, राइट? तो वन अथॉरिटीज, आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। बहुत सारे आपने इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज के बारे में सुना होगा, लाइक कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड क्रिमिनल राइट्स। आपने यूडीएचआर पढ़ा होगा, जहां जहां ह्यूमन राइट्स पढ़ाया जाता है यूडीएचआर पढ़ाया जाता है। इट टॉक्स अबाउट सिविल, पॉलिटिकल, social, cultural, economic, all rights of a human being. So similarly European Convention on Civil Rights is there. So there are many conventions जो बात करते हैं कि yes, individuals have the right in international domain. सेकेंड पे भी आएंगे, पहले जितना बताया है लेट मी टेल यू सो दैट इट इज नॉट मोर फॉर यू एंड इट इज इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट. We are on the second point. Put the heading status of individual. Put the heading status of individuals as subject oblique object in international law. Place या status of individuals as subject oblique object of international law and put a question mark. हेडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाओ क्योंकि हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस, क्या लिमिटेड एक्सटेंट है या व्हाट इज द सिचुएशन. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल in international law. Is individuals are the subject or the object that we are going to read now. तो टाइमलाइन देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे what was the classic view. Classic view means in the very beginning how we considered individuals. So earlier individuals were only considered as objects. इनको इंटरनेशनल लॉ का ऑब्जेक्ट माना जाता था. इसका मतलब they do not have any kind of responsibility, only certain rights they can enjoy, and this view was supported by Oppenheim. Jurist Hall is there, and along with Oppenheim and Hall, Brille, jurist जो कि सपोर्टर हैं that individuals are the object of international law. तो अगर एक कंट्री का नागरिक, सपोज इंडियन सिटीजन, क्रॉस इंडियन बॉर्डर
and has read Pakistan, so Pakistan can take it as an alien because of individual considered as object. Similarly, if suppose there is an individual who is stateless, stateless means at that time when the wrong is done to that individual, he is not having any nationality. जिस कंट्री का था उसकी नेशनैलिटी उसने अबेंडन कर दी, दूसरे कंट्री के प्रोसेस में है, he has not acquired. So if that person is stateless, then also he has no remedy as he is just the object of international law. तो ये लैकुना है इनके इस व्यू का कि we are leaving individuals to be unaddressed when their rights are being violated. लेकिन ये जो lacuna था that was addressed with the United Nations Charter. आपने लिख लिया होगा, I believe this much. This lacuna was addressed, but this was addressed with the enactment of United Nations Charter. हुआ क्या यूनाइटेड नेशन चार्टर के इनैक्टमेंट से? दे यूज द वर्ड पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो यहाँ पे जो वर्ड पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन है, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल to be the object of, object nahi, rather to be the subject of international law, not as the object. It means through UN Charter we have given place to individual, place मतलब importance हमने दिया है to individuals in international law. तो ये तो समझ में आ गया कि क्लासिक व्यू डज नॉट होल्ड गुड्स इन टुडेज टाइम. अब एक एकदम एक्सट्रीम व्यू देख लेते हैं जो कि कुछ जूरिस्ट का है, जो कंसिडर करते हैं इंडिविजुअल एज द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो नाउ लेट अस सी वन एक्सट्रीम व्यू. Some jurists, they considered individuals as the only subject. इनका मानना है कि इंडिविजुअल से केवल सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम स्टेट्स की जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वही राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी होगी? इंडिविजुअल्स की. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वॉट एवर आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, the same will be the right and duties of individual. And jurist like Kelson जो कहता है जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज स्टेट की होंगी वही राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल की होंगी. Kelson is of this view. He said that rights and duties of a state is equals to right and duties of individuals. अगर हम स्टेट की राइट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की राइट की, बिकॉज दे आर द ओनली सब्जेक्ट. अलॉन्ग विथ हिम कैल्सन के साथ साथ वेस्ले, ही इज ऑफ द व्यू, ये भी इसी व्यू पे हैं कि इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. If you see your mobile, yeah, if we see this panel, screen is there. Yes, screen का काम क्या होता है कि yes, हाँ yes,
जो भी कंटेंट है उसको हम आसानी से विजुअलाइज कर सकें, उसे ऑपरेट कर सकें। लेकिन क्या ये स्क्रीन मैनेज करती है बाकी चीजों को? नो। इन दिस पैनल जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा, ऑल थिंग आर बीइंग सेव्ड। यस, एवरी क्लासरूम का रिकॉर्डिंग इज देयर। सिमिलरली इन योर मोबाइल, रैम इज देयर, रोम इज देयर, कैमराज इज देयर, फोल्डर इज देयर। स्क्रीन बस उसको विजुअलाइज कराता है, लेकिन वही काम है इंडिविजुअल्स का। दे आर द स्क्रीन इन इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू स्टार्क। स्टार्क ने बोला है कि जो काम स्क्रीन का होता है, दैट इज द वर्क ऑफ इंडिविजुअल इन इंटरनेशनल लॉ। दे आर लाइक ए स्क्रीन. It means behind them many things works, but to visualize all them we have individual. पहले आप इतना लिख लो, फिर इस ताक के व्यू पे आएंगे. प्लीज राइट. The classic view was that individuals were regarded as the object of international law, and not as its subject, and this classic view was supported by jurists like Oppenheim, Brille, Brierly, and Hall, Hall. I repeat, Brierly and Hall. So individuals have no legal significance. From the international point of view, according to classic view, as they were related to one state, through the bond of citizenship or nationality, and they stood in relation to other states, in the role of aliens, full stop. Thus there was no responsibility if the injured individual was stateless. That is, if he had no nationality. But this position has
changed, but this position has changed with the establishment of UN, with the establishment of UN, comma, the United Nations Charter in its preamble, the United Nations Charter in its preamble uses the word, in single comma may you write, people of the United Nations. People of the United Nations, comma closed, meaning thereby importance has been given, meaning thereby importance has been given to individuals, to individuals. Now change the paragraph. Whereas there are some jurists, whereas there are some jurists who are of view, who are of view that only individuals are the subjects of international law. For example, Kelson was of the view, for example, Kelson was of the view that under international law, Kelson was of the view that under international law, the duties of the states, are ultimately the duties of the individuals. I repeat, under international law, the duties of the states are ultimately the duties of the individual. Both international and state laws, both international and state laws apply on individuals, and they are for the individuals, and they are for the individuals. You write about another jurist, Westlake, Westlake, West L, मतलब अगर स्पेल करो तो इट इज वेस्टलेक, बट प्रोनाउंसिएशन इज वेस्टलेक, है ना. प्रॉपर नाउन में तो वैसे भी वी कैन प्रोनाउंस, है ना. Westlake, he is a jurist. According to Westlake, the duties and the rights of the state are only the duties and rights of men who compose them. Change the para. However, this view is incorrect. Because as long as the international community is composed of states,
comma, it is only through the exercise of their will alone, rights and duties are conferred to individuals. Rights and duties are conferred to individuals. Another jurist, Lauterpacht, in his wordings, individuals are the unit of international law. Right? Lauterpacht, Lauterpacht, Lauterpacht opined, individual as the ultimate unit, of all laws, be it international or municipal, It means the obligations of international law, which means the obligations of international law are ultimately addressed to him, that the development addressed to him, that the development, comma, the well-being, that the development, comma, the well-being, yes, the well-being and the dignity of individual human beings and the dignity of the individual human beings are matter of direct concern of इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि अल्टीमेट यूनिट है तो इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट, वेलबींग सब कुछ कौन कंसिडर करेगा? इंटरनेशनल लॉ, इन द वर्डिंग्स ऑफ Lauterpacht. राइट? Stark is a jurist. Stark said the use of the state as the medium and screen, the use of the state as a medium and screen for the application of international law, cannot do justice to all the far-reaching, I'm repeating Stark का statement, the use of the state as a medium and screen for the application of international law cannot now do justice to all far-reaching
aims of the modern system. Again, I am repeating Starker statement. The use of the state as a medium and a screen for the application of international law cannot do justice to all the far-reaching aims of the modern system. I believe, Jaya, it is done.